Hello. In previous video, we understood the concept of Laplace transform, what is S domain, conversion from time domain, and we compared Laplace transform and Fourier transform in detail. और हमने दो एग्जांपल्स भी सॉल्व किए जिसका हमने Laplace transform और Fourier transform भी फाइंड किया. अभी एक मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है Laplace transform में कि दो फंक्शंस का Laplace transform सेम है बट उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट होगा, है ना. सो वी हैव टू सॉल्व दिस टू फंक्शंस Laplace transform ऑब्टेन करना है हमें, एंड वी हैव टू शो एंड वी हैव टू प्रूव दैट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफरेंट. ओके, हमने पहले के वीडियो में हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन भी किया है. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो रीजन है इस प्लेन पे जिसे हम शो कर सकते हैं यूजिंग अ स्ट्रिप, है ना, एंड इट इज पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस. वो जो स्ट्रिप है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस है. ओके, सो लेट अस सॉल्व एंड प्रूव दैट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट फॉर सेम टाइप ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म. ओके, ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया है. अगेन आई एम राइटिंग, है ना, डिटेल में इसका सॉल्यूशन है ना प्रीवियस वीडियो में है, आप देख सकते हो. एंड x ऑफ s जो है इसका Laplace ट्रांसफॉर्म x ऑफ s इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन. अगेन आई एम राइटिंग दी स्मॉल स्टेप्स, e रेज टू 2t u ऑफ t और e रेज टू माइनस सिग्मा e रेज टू st. हमारा जो Laplace ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है ये है. सो विल गेट, है ना, u ऑफ t की वजह से ये जीरो हो गया, जीरो टू इंफिनिटी e रेज टू, डायरेक्टली आई एम डूइंग दिस, सो इट इज माइनस आउटसाइड s माइनस 2 और t. तो ये माइनस s होगा और ये प्लस 2 ही रहेगा, 2t dt. एंड व्हाट विल गेट, e रेज टू माइनस s माइनस 2t डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s माइनस 2, और इसका हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, जीरो है लोअर और अपर लिमिट है इंफिनिटी. एंड विल गेट e रेज टू, है ना, अपर लिमिट रखा तो ये क्या होगा, दिस विल बिकम माइनस इंफिनिटी, t के जगह इंफिनिटी पुट करना है और ये होगा हमारा e रेज टू जीरो. सो दिस इज माइनस ऑफ s माइनस 2. So e raised to minus infinity is a very small quantity. Plus infinity, infinity है. E raised to plus infinity is infinity, but e raised to minus infinity is a small quantity. Okay, so going back, therefore it is taken as a 0. So it will be minus 1. So it is minus of s minus 2. So this is 1 divided by s minus 2. अभी इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, हमने इसको प्लॉट किया था. अगेन आई विल शो यू द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस of this function, है ना. So it is real part of s, imaginary part of s, real part of s. Okay, and what is region of convergence? s should be greater than 0. अगर 1 divided by s minus 2 में, okay, अगर मैं लेस रखूंगा तो इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होगा. इसको हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया है, ठीक है, एक बार देख लो. सो s माइनस 2, ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी, रियल पार्ट ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन 2. ओके, सो हियर वी हैव द 2 एंड दिस इज आवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. वेयर इट इज गोइंग, इट इज गोइंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज शोन लाइक दिस, and this is the region of convergence. I will label this ROC. Okay, real part of s is greater than 2. Let us obtain the Laplace transform of second function. X of t equal to minus of e raised to 2t u of minus t. Okay, we'll solve this systematically. So I am writing here x of t is equal to minus of e raised to plus 2t
u of minus t है ना, will solve Laplace transform of this. So it is Laplace transform of x of t. First we'll write the equation. Okay, x of t e raised to minus st dt. ये हमारा Laplace transform का equation है. So if you substitute here, x of t के प्लेस में क्या है हमारा, माइनस ऑफ e raised to 2t u of minus t and e raised to minus st. ये हमारा इक्वेशन है. नाउ हियर e raised to minus st जो है, e raised to minus u of t. What is e raised to minus u of t? u of minus t left sided unit step function है. So it is equal to 1 for t less than 0 and 0, okay, for t greater than 0. So how it will look like? It will look like this. Okay, so this is our unit step function. Okay, this is 1 and u of minus t going to the left side 0 and it is minus infinity, okay, or minus t. And here what is the range of t? It is going from minus infinity to 0, reverse, going to the left side. Okay, so it is called anti-causal signal. Causal is right side, anti-causal is left side, right? So if you use this, so limit of this, it will limit hai, this will change to minus infinity and this limit will change, plus infinity will become 0 because we are multiplying minus e raised to 2t using u of minus t. This is the effect of multiplication with unit step function. Let us take the next page. So here again I am writing, so left side is x of s is, so this will become minus infinity already hai and this will become 0. This is the only change. So it is minus e raised to 2t e raised to minus st dt. So our answer will be, so it is minus infinity integration e raised to minus, so it is yes, we'll take same thing, so it is s minus of s minus 2 t dt. Okay, so what we'll get? We'll get e raised to minus of s minus 2, okay, so it is minus outside and it is t and our lower limit is, what are our limits? Minus infinity and 0. Upper limit is 0. So हमें मिलेगा minus of e raised to minus, okay, we will get 0 t and e raised to infinity, हमें क्या पुट करना है? e raised to infinity पुट करना है. So it will be minus infinity and it is s minus 2. Sorry, here I forgot to write s minus 2. Okay, so e raised to minus s minus 2 by minus s minus 2. Okay, e raised to x dx का integration है e raised to x by a. So it is minus of s minus 2. So this is our integration and what we'll get? So it is e raised to 0 is 0. So it is e raised to infinity is 0 and e raised to minus 1 is minus 1. So it is e raised to 0 minus 1 minus s minus 2. So this is our x of s. So x of s is equal to 1 over s minus 2. Same thing we are getting. Okay, हमें जो इस फंक्शन के लिए जो मिला था है ना, ये जो हमारा फंक्शन है ना, e raised to 2t के लिए हमें क्या मिल रहा है? x of s equal to 1 upon s minus 2 and for that also we are getting s minus 2. Two functions having same Laplace transform. Okay, so that's why we are solving this Laplace transform of two functions. Now see the funny thing that इसका जो region of convergence है, okay, it will be on left side. Okay, we have to prove that. First of all, okay, I'll write what is region of convergence. इसका region of convergence क्या होगा? So ROC, okay, so real part of s should be less than 2 है ना. प्रीवियस फंक्शन का क्या है? ग्रेटर देन 2 है. राइट साइड के ऑल वैल्यूज वी कैन पुट 3 4 5 अप टू इंफिनिटी
we can obtain the region of convergence for that function. But this function is going left side, anti-causal signal, and इसका जो region of convergence है should be less than 2. Okay, and we'll sketch the region of convergence of this. इसका जो region of convergence है, it is to the left side, and we'll prove why it is left side. So it is imaginary part of S plus imaginary part of S, and it's a real part of S, and it is minus real part of S. Okay, you can write here sigma minus sigma j omega and minus j omega. Okay, या तो ये लिखो या फिर माइनस j omega लिखो. Okay, both are correct. So region of convergence जो है इसका वो है less than 2. So it is going to the left side. Okay, up to infinity it is going. So this is region of convergence. Okay, so this one is going to left side. Okay, and this one is ROC. Real part of S should be less than 2, and here it is 2. Now how to prove this? Less than 2 चाहिए इसके लिए. Okay, and what we have? Okay, let us prove कि इसका region of convergence real part of S less than 2 क्यों है. ठीक है, let us take a one value 3. Okay, 3 को पुट करेंगे Laplace इंटीग्रल में, and we'll check why this 3 is not part of ROC of the second function. ठीक है, so let us take, okay, let's take real part of S, okay, greater than 2. इसको चेक करेंगे. Okay, verify it whether it is the part of ROC or not. ठीक है, so what we have, हमारे पास इंटीग्रल है. Okay, so we have integral. What is our integral? So x of S is equal to minus infinity to plus infinity e raised to, है ना, this one. Take this integral. Okay, this integral, this one. Take this equation. It is, sorry, it is 0. This one. Put value of S equal to 3 and see what happens with integral, whether it converges or diverges. Okay, what is meant by converges? When we'll get finite value, okay, the function is decaying, it means it is converging. Okay, so let us take this. So e raised to, it is minus S minus 2 t dt. Take value of S equal to 3 and see what happens with the integral. Okay, because 3 is not part of ROC. ये जो 3 है, it is not in ROC, है ना. ये ऐसा वैल्यू है जो ROC में नहीं है, and we are trying to prove that why it is not in ROC. Okay, region of convergence में क्यों नहीं है ना, ये अभी पता चलेगा. So x of S will become, so it is, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ का लिमिट मैंने रॉन्ग लिखा है, so it is 0 actually. Okay, 0 and it is minus infinity to 0 e raised to, okay, S equal to कितना लेना है हमें, 3 minus 2 t dt. So this will be minus integration to 0, so e raised to, ये क्या होगा, minus 1 t dt. 1 minus 3 minus 2 is t. So its integration क्या आएगा, so we'll write here. Okay, so it is x of S is equal to e raised to minus 1t divided by minus 1, so it is minus infinity to 0. ये हमारा लिमिट है. Okay, so देखिए what will happen, so this will become minus, so it is minus e raised to, so this is minus e raised to minus t minus infinity to 0. Now this is simple. So it is e raised to, first substitute upper limit, क्या होगा, minus of minus 0, then e raised to
है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस माइनस एंड दैट लिमिट के लिए हम जो माइनस करते हैं वो माइनस हो गया, सो दिस विल बी इट विल बी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। ओके, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, ऑलरेडी माइनस टी है, सो माइनस टी है ना, टी के प्लेस में क्या किया हमने, माइनस इन्फिनिटी रखा, सो दिस विल बिकम, सो इट इज माइनस 1 e raised to 0 1, so it is minus 1 plus e raised to plus infinity, so this is minus 1 plus infinity is equal to infinity. Okay, so this means the integral is not converging for value of s equal to 3. s equal to 3 क्यों लिया हमने, because it is real part of s, है ना, वी कैन टेक दिस एज अ सिग्मा ऑल्सो। ओके, रियल पार्ट ऑफ एस सिग्मा है, सिग्मा के वैल्यू कितना है, 3 है, जो कि आउट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जांपल्स आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। दो फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम हो सकता है बट उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट होता है। ओके, एंड वी हैव प्रूव्ड दिस बाय यूजिंग दिस टू एग्जांपल्स।